गुज़िश्ता साल न्यूयॉर्क में ڈکیتی की वारदात के दौरान जहां बहक होने वाले न्यूयॉर्क पुलिस के नौजवान पाकिस्तानी नژاد पुलिस افسرعدید फीयाज़ की बरसी का एहतमाम हुआ, जिसका इंतज़ाम न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट और न्यूयॉर्क पुलिस में मौजूद पाकिस्तानी पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल तंजीम पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्समेंट सोसाइटी ने किया था। इस खुसूसी तकरीब में न्यूयॉर्क पुलिस के आला अफसरान समेत दर्जनों अफसरान और कम्युनिटी से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जबकि पाकिस्तानी कौंसल जनरल आमिर खान भी खुसूसी तौर पर शरीक हुए। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। उसके बाद पुलिस के दस्ते ने रवायती अंदाज में सलामी दी। प्रोग्राम में मरहूम के मासूम बच्चे, अहलिया, वालिद, वालदा और बहन भाई ने शिरकत की। मरहूम के वालिद ने न्यूयॉर्क पुलिस का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने हर मरहले पर उनका साथ दिया। मरहूम की अहलिया ने भी अपने मासूम बच्चों के हमरा खिताब करते हुए पुलिस डिपार्टमेंट और पुलिस की तारीफ की, जिनकी कोशिशों और ताउन से अदीद को ऑन ड्यूटी शहीद होने का दर्जा मिला। My late husband and father of Ryan and Zayan Fayaz. Your attendance gave me comfort and support during the difficult time. The kindness shown to me by everyone means a lot. Sincere thank you to PBA, Pat Henry, and Paul's President Walé for securing approval for my husband line of duty. Also, huge gratitude to Tunnel Tower for supporting and arranging a beautiful house for us. कौंसल जनरल आमिर खान का कहना था कि उन्हें खुशी है कि हमारे पाकिस्तानी अफसरान बेहतरीन तरीके से अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं। As we gather here today to mourn the passing away of an individual, as I said, who is not just a professional of the highest order in the NYPD, but was also a dear friend and a loving father. मारूफ आलमदीन मकसूद अहमद कादरी ने अदीद फयाज को शहीद करार देते हुए कहा, अपने और दूसरे की जान और माल की हिफाजत करते हुए जान देने वाला शहीद होता है। पुलिस बेनिफिशरी सोसाइटी के नुमाइंदे समेत मुख्तलिफ पुलिस अफसरान ने भी खिताब में अदीद फयाज को खिराज तहसीन पेश किया। Because of all you in this room and the work we did, we finally got that designation for our hero officer who earned that designation as a hero officer, and his family will carry on his legacy. But I tell you here today, it doesn't end here. The PBA, our police officers from the 6-6 precinct and across this city will always be here for this family. However, during my tenure as the commanding officer of the 6-6 precinct for the past 5 months, I've had an opportunity to interact with many of you. Whether it be in passing along the hallways, in the muster room, on jobs, or outside functions, I have come to know each of you. And in many of those conversations, the memory of a deed has almost always come up. One such memory that stands out is a memory that I have when I worked this past New Year's Eve with Officer Lynn, a deed's former partner. As we worked together responding to calls on New Year's Eve and backing up sectors, Officer Lynn shared stories about a deed. And it was through these stories that I gained insight into the values and principles that a deed held dear. In our lives, we would like to be like somebody today.
we have a figure, we have a person. But only martyrs are liked by people that when the time comes they would love to die like they did. So martyrs like our brother Fiaض will be honored, but many of us would love that moment when we come to die a martyr. And martyrhood is not given easy to those who do not deserve it. عدید فیاض کو گزشتہ سال ایک شخص نے ڈکیتی کے دوران فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ اور پاکستانی لا انفورسمنٹ سوسائٹی کی کوششوں سے مرحوم کو آن ڈیوٹی جاں بحق ہونے کا سٹیٹس دلوایا، جس کے بعد مرحوم کے اہل خانہ کو مکان اور دیگر مراد مل سکیں گی۔ کمیونٹی نے NYPD کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اقدامات نوجوانوں میں پولیس فورس جوائن کرنے کی خواہش کو بڑھاتے ہیں، جہاں ان کو ایک خاندان کی طرح سمجھا جائے۔